TV1 USA हमेशा कम्युनिटी के साथ रहता है और हर मौके पर कोई भी मुश्किल हो या कोई भी अच्छी चीज़ हो हमेशा कोशिश करता है कि हकाइक और तमाम मालूमात जो है वो कम्युनिटी के साथ शेयर की जाएं, उनको सामने लेकर आया जाए। इस वक्त कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरीज़ 8 मिलियन कश्मीरीज़ तारीख की बदतरीन जेनोसाइड और जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 47 डेज से वहाँ पर कर्फ्यू है और वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते और तमाम दुनिया जो है वो देख रही है ये तमाम तमाशा, लेकिन खामोश तमाशाई बने हुए। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, उनके लिए मुजाहरे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ रैलीज निकाल रहे हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका में भी जो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस भी खामोश है और वैसे अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी खामोश हैं, लेकिन पब्लिक जो है उसमें बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरियों का साथ दिया जाए और वो भी ऐसे मौके पर जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि जिम्मेदार हैं तमाम चीज़ों के, नरेंद्र मोदी, वो यहाँ विजिट कर रहे हैं ह्यूस्टन में और 22 तारीख को यहाँ पर उन्होंने एक जलसा जो है वो मुनक्किद किया है अपने लिए, जिसके खिलाफ और भी ज़्यादा गम और गुस्सा जो है वो पैदा हो गया है इसी वजह से कि उनका यहाँ आना जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त जो है वो बनता नहीं है उनका आना और किसी तरह भी वो मुनासिब नहीं है। इस मौके पर यहाँ के तमाम लोगों ने मिलकर एक रैली भी मुनक्किद की है और वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, एक पुरअमन एहतजाज करेंगे वहाँ पर NRG स्टेडियम में। इस सिलसिले में एक ख़ास बात जो देखने में सामने आई वो ये कि हमारे सिख भाईजान जो हैं वो यहाँ पर एक तंजीम है सिक्स फॉर जस्टिस, उस तंजीम ने कश्मीरी मजालिम पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का और तमाम लोगों का और अपने तौर पर भी बहुत साथ दिया और वो भी मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो इनको रोका जाए, इन मजालिम को रोका जाए और किसी तरीके से भी कश्मीरियों की जो आज़ादी है उसके लिए काम किया जाए। तो इस सिलसिले में ये आज हमने जो स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया है ये सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से है और उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है यहाँ पर और वो हमें बताएंगे कि ये ख़ास जो एक मोड़ आया है वो ये कि सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से एक लॉ सूट फाइल किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उसकी जो प्ली है वो ये कि ये जो टॉर्चर यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उन्होंने ये लॉ सूट फाइल किया और उसकी प्ली ये है कि जो टॉर्चर वहाँ पे इनके रिश्तेदारों के साथ किया गया है और एब्डक्शन है या वो गायब हो गए हैं या जो कुछ भी है उनके साथ, उसकी तफसील जो है वो हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू और ये लीगल एडवाइजर हैं सिक्स फॉर जस्टिस के। इनके साथ हम बात करेंगे और ये हमें डिटेल बताएंगे इस लॉ सूट की जिसने दुनिया भर में इस वक्त तहलका मचा दिया इस लॉ सूट ने। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पन्नू साहब से। हेलो जी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर फारा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुरुज बख्शिश। आपने बहुत बड़ा काम किया है तो पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। बड़ा काम नहीं किया। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट दिस इज 550th birth anniversary of our first guru, Guru Nanak Sahib. अच्छा, और आज है? this year in November. Okay. और साडे गुरु दा फलसफा है कि जिस जगह दे उत्ते भी किसी भी इंसान ते कोई उसका धर्म की गल नहीं कर रहे सी, किते भी धक्का हो रहा है तो जो गुरु नानक साहब का सिख है उन्हें आवाज़ चुकनी है और दैट इज़ द रीजन बिहाइंड के असी 550वें साल ते जदों कश्मीर दे विच 8 मिलियन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ what they are going through is the genocidal violence at the hands of the Modi government ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 1984 ਚ ਉਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 70,000 ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ इंटरनेशनल जी कम्यूनिटी है जर्नलिस्ट है उन्होंने उतों बाहर कढ़ के और इस तरीके का माहौल बना के उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कि सारे दुनिया के देशों को अपने नाल मिलाया कि जो सिख है वह अतवादी है और 3 महीने साढ़े 15 तो 18,000 जो नौजवान है उन्होंने मार मुकाए और असी अपनी अखी वो सारा कुछ वेख्या। सिक्स हैव गॉन थ्रू दिस जेनोसाइडल वायलेंस एंड स्टिल गोइंग थ्रू। सो एक 550वां गुरु नानक साहब का साल और उत्तों दी असी वो जेनोसाइडल वायलेंस वी हैव गॉन थ्रू दैट वन
We cannot stand that India, which has been doing this for the last 35 years, under the grab of the biggest democracy, the whole world knows that this is not a democracy. This is worse than a dictatorship. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ये आपको एक प्ली मिली है, आपको ये कोई सेक्शन है इसका यूएसए का, इसके बारे में बताइए कि ये कैसे, कि वो तो दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वो तो उनका क्या होगा इससे। देखो, this the case which we have filed against Prime Minister Modi, this comes under a US specific law that is called Torture Victims Protection Act of 1991. And George Bush, the president, has signed that into law in 1992. And the top human rights organizations like CGA, that is the Center for Justice and Accountability, and major other organizations, they have used this law because the objective of this law is to hold the powerful accountable. Anywhere in the world? That's what I'm going to tell you. The law says that if an individual, even if he is acting in his official capacity or in a capacity which shows that he is the official, but in this particular case he is the Prime Minister, he is openly stating and threatening the people of Kashmir. Right. So ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, whether it's a foreign government, that is the issue here. And if he comes to the United States, and if there are US citizens or residents alike, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ victims ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ family members ਹੋਵੇ, they can file this civil lawsuit under that section, that is TVPA. So we have used that law to hold Modi accountable in a civil lawsuit, and the summons has already been issued, which we will be trying in the next week or so to serve while he is in the United States. ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन हम होल्ड करते हैं इसको। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम सलाम, मादाब से आप दोनों साहिबीन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं से आप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हाईली अप्रिशिएट हमारे सरदार भाई साहब को कि इतना केस कर रहे हैं आप दोनों मिलकर, रियली अप्रिशिएट दैट। वन क्वेश्चन आई है, वो क्वेश्चन ये है, क्या जिस तरह अमेरिका में आप सिटिंग प्रेसिडेंट को इंडाइट नहीं कर सकते, क्या मोदी को आप लोग कर सकते हैं? क्या इंडिया में अलाउ है करना कि सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडाइट कर सकते हैं? Like your question is, can you indict Modi in United States? That's the question? Yeah, that was the question. Okay. So that's a very good question. So like if you look into the law, the immunity, heads of the states enjoy immunity. Modi has an immunity. But the way the immunity works in the United States federal courts is that when we have filed the case, the next step would be that we will be serving on him. There would be a process service. And let's say if we are successful in that one, then US Department of State. How will you serve? You will go there? Somebody has to go, process servers, or we have different ways. If we cannot serve him within 21 days, then when we can use the international laws. We can use the Hague Convention of Process Service, which has been used by various organizations in the past. So we can serve him in Delhi. There is a central authority that has been set up by Hague. So you will send the message from here to Delhi? There is a process through for that international one. law? Through the international law. That's called Hague Convention. And the under Hague Convention, everybody has signed it, and India has ratified that in 1960s. So we can use Hague Convention also. Whether we are successful in that or not, that is a separate issue. But his question was that can we indict him? This case is not about indictment. This is about a compensatory damages. Right. What the US Department of State can do and will probably like to do in this case, because President Trump wants to be on the good side of because of the economic benefits and the larger Indian population, 1.2 billion, everybody wants to do the business with them, including Pakistan. When US Department of State intervenes, they're going to have to go to the federal court and the judge that because of the Foreign Sovereignty Immunity Act, we want to give him an immunity because it will be an issue with the foreign relations. Now it's up to the judge
to decide whether he wants to give him the immunity or he wants to proceed with the case. But in this particular case, Narendra Modi is the only political leader in the world ever. There is a US law, that is International Religious Act of 1998. And if you would recall, after 2002, or when he was responsible for the massacre of the Muslims in 2002 of the Gujarat, he was banned. His visa was revoked by the United States, by Canada, by European Union and United Kingdom. So you mean to say, in other words, he's already a criminal in their opinion or eyes? Means they have I law, wouldn't say that he's already a convicted criminal, but not convicted, but he's in the books. He is in the books that he is responsible for the human rights violations. Right. Because the US has So this is on record actually. On record, because when US is banning somebody, when Canada is banning somebody, this means they have more evidence than what you and me have it. So that's why they ban these individuals. So we are going to bring all those issues in front of the federal court. So do you think it's going to help here with the judge? That only time will tell whether it is going to help or not As help. an attorney, legal advisor. Of advisor. course it is going to help, and we're going to impress upon the federal judge of course and the US. You will prepare your case just according to that, yes, you know? Yes, and in this the will light be very of the previous ban. Yes, this will be a very strong argument in front of the federal judge that if you do not hold him accountable in the United States, where else it will be? And if you do not want to use your Torture Victims Protection Act, then where you will use this law? If you're not using against Modi, who would you be using it against? If you're giving immunity to Modi, then what about this particular law? Then it's better that we do not have the law. Yeah. So I was reading your case, which you sent me already on the email, and I saw there is one winner out of in 1992, Miss Ortiz. Yes. Can you tell me about that? As soon as the law was passed, there was a Guatemalan army general, and he was involved in the torture, rape about the sister of one of those plaintiffs. And the US court, I think, has awarded at that time $4.5 million as damages. So and this the is the court law decided on itself, according to witnesses and the discoveries and everything. In this particular case, we have been approached by like more than right now 20-25 people, victims. But they are trying. What is happening is right now there is a violence and there is a suppression and there is a torture that is going on in Kashmir. The people and the victims have still families who are suffering. So they do not want to give their name. That's why we are just using 2 individuals. But in the coming days, if we are successfully able to serve him, we are going to amend the complaint and bring many more. It's going to be a class action lawsuit. So I have one more question. You say it was in the papers also that 21 days, you have 21 days to prove also that they are the victims. No. We have 21 days. He has to answer. No. We have to serve those papers, that complaint and the summons on Modi and the Union Home Minister Amit Shah. And we have also named a Indian journal. His name is Kamaljeet Singh, because he is the journal who stated openly and threatened the mothers of the Kashmir that if I see and if I find your son and daughters on the road, I'm going to shoot them. There is the open threat he gave it. Within 21 days, we have to serve these papers on these defendants. Okay. And if we are not able to serve within 21 days, as I stated, then we're going to use the international law to serve them in India. I see. So how will you provide them the proofs of it? How you plan to do that? Oh, we have a plenty of proof. Like we have Al Jazeera, do you have to provide we have New York Times. Special victims proof? Yes, we have everything. The proving the case is not going to be an issue. Proving the case is not. The issue is the first and the foremost hurdle is if we are able to successfully serve upon Modi, then the US Department of State. So he's coming here, you can serve him. I wish it's that easy because we have to follow the law. You can serve him only Saturday because Sunday you cannot do the service. That is the law. And then probably he's planning to go to New York. We will try our best over there. I see. Yes. Okay, there's a time for a break. एक ब्रेक का वक्त हुआ है. Sure. बहुत अच्छा आपसे बातचीत रही. Thank you very much. तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा और आप लाइव कॉल कर सकते हैं. ये प्रोग्राम लाइव है. हमारा स्टूडियो का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1855886638 एक्सटेंशन है 2. लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इसके बाद फिर वापस आते हैं.
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं कश्मीर टू खालिस्तान जो TV1 पेश कर रहा है आज आपके लिए। और इसमें हमारे सिक्स फॉर जस्टिस से आए हुए भाई सिख भाई जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बख्शिश सिंह संधू जो प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ खालिस्तान के। हेलो जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, ठीक है आप? गुड, थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हैं? फिलाडेल्फिया से आया हूँ। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं? प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ खालिस्तान के। हाँ जी। तो ये बताइए कि ये खालिस्तान क्या है? ये कश्मीर टू खालिस्तान भी आपका हैशटैग भी है। हाँ जी, जिस तरह के इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776 अमेरिका के लोगों ने इकट्ठे होकर एक डिक्लेरेशन की थी कि ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे हैव सर्टेन अनएलिनेबल राइट्स एंड दोज राइट्स इंक्लूड लाइफ, liberty and pursuit of happiness. Okay. And if the government does not protect those rights, then people have the right and the responsibility to change the government and create a new one which will uphold those rights. Okay. Taking that as a basis, the Sikhs and all the Punjabis, their rights have been violated. There is a human rights violation. There have been unspeakable tortures, extrajudicial killings, and genocide of Sikhs. So therefore, we in want India. In India, and this law is in India. This concept that we want the people to be able to create a government which will uphold their rights. However, since 1947, the people of Punjab have been subject to unspeakable tortures, genocide of Sikhs, Golden Temple attack in 1984. And genocide of Sikhs in November 1984. So you're facing almost the same problem for a long time. We are facing exactly the same problem that Americans were facing when they were under the control of British government. And so, the Kashmiris right now. And same thing applies to the Kashmir. What's happening now in Kashmir? Like there are no medications, there are no food, there's a complete cut of communications, people are dying in the hospitals. The exact same thing happened in Punjab in 1984, 35 years ago. So the Kashmiris, they have no communication and there's complete news media blackout. Same thing happened in Punjab in 1984. Indian government did not allow any news media, and the journalists who were present inside, they were basically captured and they were put on trial. And eventually they were exonerated. But there's a complete news media blackout because India does not want any other country in the world know that what's happening, how they are basically persecuting minorities, Sikhs and Kashmiris. अच्छा, हम और होल्ड करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या ये मुझे बताएं जी, बताइए कि ये जो इससे पहले भी साहब आए थे तो इनको सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा इनका शुक्रिया अदा करेंगे जी कि ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं कश्मीरी हूँ जी, और ये हमारे साथ खड़े हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि इन्होंने जो अभी कोई केस किया जो इससे पहले आए थे, वकील साहब थे, वो बता रहे थे जी, तो उसको सबन कब और कैसे भेजेंगे? वो उन्होंने डिटेल में उस पहले सेगमेंट में बताया था हमें कि 21 डेज हैं इनके पास समन सर्व करने के लिए, और एक इंटरनेशनल लॉ इनको अलाउ करता है कि वो जहां पर हैं वहां पर वो समन सर्व किए जाएंगे। उस इंटरनेशनल लॉ के तहत ये यहाँ से वहां दिल्ली भेजा जाएगा, और अगर इनको खुद जाना पड़ा ये जाएंगे, और अगर नहीं जा सकते तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल ये समन सर्व किया जाएगा वहां पर। तो ये 22 तारीख को नहीं दे सकते जाके, जब आ रहे हैं वो यहाँ पे तो उसको सर्व करवा दें यहाँ, अगर केस उन्होंने यहाँ पे किया है तो? जी, मैंने एग्जैक्टली उनसे यही सवाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक खास दिन है और वो एक खास तरीके से सर्व किया जाता है जो संडे को नहीं हो सकता। संडे को नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात तो यही है कि हमारे साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने इतनी स्ट्रगल की और अब आप इस स्ट्रगल में कश्मीरियों के उनका साथ दे रहे हैं, तमाम दुनिया क्यों खामोश है आपके ख्याल में? असली तौर पर जी दुनिया वा बहुत लोगों को अजे पता नहीं कि हिंदुस्तान इंडियन गवर्नमेंट जी कर क्या रही की कर रही है।
कि जिस तरह के हुण कश्मीर दे विच दे टोटल न्यूज़ मीडिया blackout. In 1984 there was no news media allowed to enter Punjab. Similarly, even now the United States government, international religious freedom members who want to go to India and monitor कि इंडिया विच की हो रहा वा, पर उन्हां दे मैंबर नूं वीज़ा नहीं दिता 3 साल वास्ते. सो असीं एक क्वेश्चन पुछदे हां कि व्हाट इज इंडिया हाइडिंग, इंडिया में क्या हाइड कर रहे हैं? वो हाइड कर रहे हैं रेप्स, टॉर्चर्स, परसिक्यूशन एंड जेनोसाइड ऑफ पीपल ऑफ पंजाब एंड कश्मीर. हमारे साथ एक और कॉलर है, होल्ड करेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं. वालेकुम अस्सलाम. मैं सबसे पहले थैंक यू अदा करूंगा हमारे भाई साहब का जो हम लोगों की मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या एक सिटिंग प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्या समन दे सकते हैं? जिस तरह अमेरिका में अलाउ नहीं है, क्या वहां पर इंडिया में अलाउ है? मेरा ये क्वेश्चन था मालूम करने का, क्या ये वो लोग एक्सेप्ट करते या कोई, यानी उनको वहाँ के लॉस क्या कहते हैं, क्या अलाउ है या नहीं अलाउ है, ये मालूम करना चाह रहा था मैं आपको इसका मैं जवाब दे देती हूँ. इसका वो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले सेगमेंट में कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंडिया ने साइन किया है इस इंटरनेशनल लॉ पर, जिसके मुताबिक सर्व किया जा सकता है. वो भी उसमें आते हैं उस कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने साइन किया हुआ है. ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच. वापस आते हैं आपकी तरफ. आप बता रहे थे कि दुनिया क्यों खामोश है. दुनिया इसलिए भी खामोश है क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ टुडे. People are concerned about their economics, about their country's welfare. So while this is happening in Kashmir, we are asking the whole world to stand up with the people of Kashmir, because this is their moral duty. जिस तरह के as साल 550 गुरु नानक देव दा जन्मदिन आ रहा वा, उन्हां दा प्रकाश उत्सव आ रहा वा, ते उन्हां ने बाबर दे घोड़े दी गुलाम फड़ के कहा सी, बाबर तू जाबर है. ते उन्हां दा मैसेज ये सी, we must speak up and speak out. So ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, you should speak up and speak out, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ economic development ਜਿਹੜੀ ਆ is not going to change. Because people want to have a relationship with India, their economical, their trade relationship, which will not be adversely affected. But I think your first responsibility is a moral responsibility to stand up with the weak and stand up the people who need your help. Now is the time. We challenge the whole world community to stand up with the people of Kashmir and end the torture and the basically genocide and violence that's happening in Kashmir should stop, and the whole world should help them. तो इसका मतलब तो ये हुआ आपकी बात से मैं ये नतीजा निकाल रही हूँ कि इस वक्त दुनिया में वर्सेस है इकोनॉमिक्स वर्सेस ह्यूमैनिटी. इज इट ट्रू? It's very true that economics versus humanity. तो humanity हार रही है. Humanity, people inside, many people have supported, like France, and they have said that the Kashmir problem should be solved by talking, by negotiations. So people understand that there's a problem which is on both sides, the problem is, and they want to solve it by peaceful means and through negotiation. But I think they should be more outspoken. They should more be people who are weak and they need help. We should support them. मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से. शुरू में आपने एक बात कही थी, people don't know a lot of facts. तो फैक्ट्स लोगों तक, हालांकि इस वक्त जो है वो मीडिया बहुत स्ट्रांग है, इंटरनेट बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, हर चीज मीडिया पर आ जाती है, लेकिन somehow इंडिया हैज बीन सो सक्सेसफुल इन हाइडिंग स्टफ. तो यहाँ पे हम लोग जितने लोगों से मिलते हैं हमें पता चलता है कि उनको आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है. हाँ जी, we are trying to tell the whole world how India is suppressing our voices. For example, we are very active in distributing information, like in Canada, UK, Europe, and here. For example, we had the declaration of this referendum in 2020 last year on August 12, 2018. So Indian government told the UK government that they should disallow us from holding the referendum declaration. However, India ignored the fact that the UK had allowed a referendum in 2014 in Scotland, and the UK also did the Brexit. And Indian government has done its own referendums, like Junagadh. In 1948 February, they attached Junagadh by referendum. But when we want to do the referendum, they basically capture our workers,
they torture them, they put them in jail, and they are sent to life imprisonment. And we are saying to India, look, you have had your own referendums. UK has done referendums. Scotland referendum happened. Canada allowed referendums. And referendum is our right. The United Nations Charter gives us right to hold the referendum for the right to self-determination. And this law, the right to hold referendum and right to self-determination, is just cogence, means that's a law. And this law cannot be picked apart. You're going to have one part of this and not have the other part of this. The whole law stands as is. And India is party to that. So how come they can mold the law? They cannot. That's what the United Nations says. You cannot mold the law. This law is such a strong law, has been strengthened by many conventions and many ordinances in which it should be done. However, I want to let the whole world know there's a United Nations against torture, inhuman treatment, which India has not ratified. So how come they cannot see this? United Nations cannot United Nations knows about it. They know the facts, but they're trying their best, but they don't have any system in which they can easily send the forces. But this has to be passed the Security Council. And I think we are bringing to the attention that since India has not ratified this treaty, they carry out tortures. We also want to let the whole world know under the Universal Declaration of Human Rights, which India has ratified. So Universal Declaration of Human Rights says all people are equal and nobody should be held in slavery and servitude. And but India, having signed this, is violating the international law, just like annexing Kashmir and abrogation of Article 370 and 35A. India has basically violated the international law, which we want to bring to the attention of international community. The international community should be involved to solve the problem of Punjab and Kashmir, because this is a human rights issue. This is our right to hold the referendum, and they should help us. So tell me, what is Khalistan and how Khalistan iske saath mil kaise gaya Khalistan? After during the time of partition of India, the negotiations leading to that, the Sikhs were promised an autonomous state in northern part of the country. I see. The same happened with Kashmir. Just exactly the same thing happened. So Indian leadership reneged. It was a betrayal. It's basically wooing people and then denying the rights, denying the promise that was made. Similarly, the Kashmiris were promised certain rules, certain protection, and they have taken that way. If India had not created Article 370 and 35A, the Kashmiri would have not come to India. They would have not gone with India. Similarly, if the Sikhs knew that there's going to be betrayal, we would have not gone with them. We want to create a country of everybody. I want to make the emphasis on this, that the Punjab Khalistan will be country of all the people, whether they are Hindus, Sikhs, Muslims, Christians, whoever they may be. It will be based on the model of Maharaja Ranjit Singh. And I want to also say that our fight is not against a religion. Our fight, our campaign is not against a certain person. Our struggle and campaign is against the system, the Indian system, which has been persistently persecuting minorities, unspeakable tortures, and violation of human rights has been going on since 1947. However, with Modi in power, this has significantly escalated. Because of? Because of the Modi's party, BJP's agenda is they want everybody in India to become a Hindu. And they are doing it right now. Absolutely, they are doing it because they had in mind that if Modi wins, they want to take the rights of the Kashmiris away. So this was their plan. So, but they made the plan basically more open once he won the election. So that's what he's doing right now in Kashmir. Exactly, they are carrying the party's agenda that they want India to be one religion country. तो अभी कश्मीर अभी क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा अभी? I think what's happening in Kashmir is it must stop immediately. We 4 senators have written to President Trump that he should ask Modi for immediate ending of this total
shutdown, total lack of communications. There's no food. There's no there are no medications. People are dying in the hospitals. So the Americans are very peaceful people. They are loving the freedom. And as I said, many senators, including Senator Lindsey Graham of North Carolina, he has, with other senators, written to President Trump that this should immediately come to stop. So people are helping. We appreciate all the Americans who help us to achieve a right of self-determination, right to freedom, and right to life, liberty, and pursuit of happiness. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सेगमेंट का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इसके बाद मज़ीद आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम कश्मीर टू खालिस्तान, जो स्पेशली तरतीब दिया गया है सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से, और हमारे सिख भाई जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई उनसे उस लॉ सूट के हवाले से जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया है, और उसको सर्व करने की जो तैयारियां की गई हैं। हमने पहले सेगमेंट में उससे बात की, उसके ऊपर बात की, और दूसरे सेगमेंट में भी हमने थोड़ा सा कवर किया। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवतार सिंह पन्नू, जो ना सिर्फ कोऑर्डिनेटर है SFJ विच इज सिक्स फॉर जस्टिस, बल्कि फाउंडर मेंबर भी हैं सिक्स फॉर जस्टिस के। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरदम सिंह आजाद, चेयरमैन सिख नेशनल सेंटर, जो कि ह्यूस्टन में मौजूद है उसके। तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह जी वाह, बड़ा जबरदस्त, आपका तो लोगो भी बड़ा अच्छा है। तो ये बताइए, हम आपसे अब हमने पहले दो हिस्से तो कवर कर लिए और आप लोग शामिल हैं ऑफ कोर्स, ये जो लॉ सूट फाइल हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, जो लॉ सूट होया लीगल साडी टीम जिहड़ी आ, साडे लीगल एडवाइजर गुरपतवंत सिंह जी पन्नू कह गए, ये जो लॉ सूट सीगा ये बहुत जरूरी सीगा इत्थे करना, क्योंकि जिहड़ा भी मनुखी अधिकारां दी किसी भी बंदे ने लंघना कीती आ, यूनाइटेड नेशन दा जिहड़ा यूनाइटेड स्टेट दा लॉ वा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। तो ये आपके जो पन्नू साहब हैं दूसरे, बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट लॉयर हैं कि उन्होंने ये कानून निकाला, सोचा इसके बारे में। बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ये तो एजुकेशन जितनी भी पढ़ लो उतनी थोड़ी है, तो उन्होंने पढ़ी एजुकेशन। हम हरदम सिंह आजाद साहब से पूछेंगे कि ये नेशनल सिख सेंटर के चेयरमैन है यहाँ पर, तो कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ? Just a little bit about me. I came to this great country in 1963 as a student, became naturalized U.S. citizen in 1974, some 45 years ago. Having lived what freedom is all about, you had raised this question with in the previous segment with Dr. Bakhshish Singh Sandhu, and I want to elaborate the answer. Why is the world silent? Particularly Southeast Asia is silent because people think the liberty flows from their governments. In the United States, what I have learned and lived through is it does not. It's reverse. It flows from your God. Allah provides you certain basic human rights. When those human rights are attacked, whether it's Modi today or Indira Gandhi in case of Sikhs back in 1984, these oppressors all over the world will come and go. People at large will rise up when they understand that the governments don't give these rights. They don't belong to these governments. They belong to the people because God put them on this earth with those rights. But these governments, they hold it. They don't give it to the people. The government withhold it, they steal it. And governments lie. Right now, there's a lie, big, huge lie is that India is the largest democracy in the world. Yes, large in numbers, true. Is it democracy? No. No, democracies do not suppress minorities like India by edict. The RSS and BJP party philosophy is Hindustan. That is not peaceful coexistence.
So again, my question is the same. Why the people of the world or the world cannot see the two-faced democracy? That because the powerful control media in a manner that people are kept in dark. Even the power such as United States, their State Department has been denied visa 3 years in a row. The religious people from here want to see if the minorities have the rights to exercise their religious liberties. Is that true? So can we say here one more thing, that okay, they are hiding it, their media is hiding it, they are powerful, but can we say that the other side is silent too, because we have not raised our voice in a way, in a manner that we should be? The silence even of the political parties in India over this issue even is who are against deafening. Who are against it, they are, I believe, afraid of reprisals from the government of India, and so the dictators, which currently Modi is following exactly what Hitler did in Germany. Indians don't know too much about, Pakistanis don't know too much about who was Hitler, how did he was popularly elected. Today, Indians, all they see is Indian population. Yeah, Modi was popularly elected. Well, so was Hitler. Yeah, that's true. They killed a lot of Jews over there, the same way they burned them alive and all that. 4 million Jews were killed. 4 million Jews were killed, yes. And you add up Sikhs over since 1984, when government of India attacked Golden Temple, I spoke out as a single Sikh voice. I was on all kinds of American media. The Indian media will color even this interview. They'll pick it up and they'll say these are a few people that are disgruntled with India. No, you people have the designations, you are doing something on the top level, so they cannot say that. Nobody can deny that. मैं पन्नू साहब को जो है वो बहुत दिन से देख रही हूँ, because I'm working with them. कश्मीर रैली के लिए IHF के साथ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ आप काम कर रहे हैं. लास्ट वीक आपने एक ट्रकों की बहुत बड़ी 100 ट्रक थे उसमें जो रैली निकाली थी, उसका क्या इफेक्ट हुआ, आपको कैसा लगा वो, और क्या इफेक्ट हुआ शहर के ऊपर? सब तो पहले मैं टीवी चैनल देख रहे सारे ही भैन भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम। देखो जिहड़ा ये रैली कढ़ी गई सी, ये साडे ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਜਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੂਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ह्यूस्टन में ऐसा कभी नहीं हुआ, कैसे नहीं, कभी नहीं हुआ जी, इसकी तारीख में नहीं हुआ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ। So it's kind of awareness, people want to know, the people to the awareness, because आपके वो बैनर लगे हुए थे ट्रकों के ऊपर, तो अवेयरनेस क्रिएट हो रही थी कि क्या हो रहा है, कश्मीर क्या है, कश्मीर में क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए ਆਪਾਂ बैनर बड़े बड़े लाए सी। 53 फुट बैनर ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 22 ਨੂੰ संडे ਨੂੰ। तो 22 तारीख को जो एक पुरअमन एहतजाज करने का इरादा है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शामिल है पूरी, और आप लोग भी शामिल हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी शामिल है, कश्मीरी भाई शामिल है, ते जेडे साडे सिख भरा ने वो सारे शामिल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जेडी वो शामिल है, इंटरफेथ शामिल है उसमें। बिल्कुल सही गल है जी, वो सारे शामिल है। इस करके बहुत वड्डा जेड़ा ओदी जेडी रैली इत्थे कड्ढी जा रही है, वो बहुत ज़्यादा मोदी के बरखलाफ जो सारे लोग ने वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उत्थे जी मनुखी अधिकारों की जी उल्लंघना की जा रही है।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ क्या उस दिन प्लान क्या है आपका? ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਵੀ ਸਪਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ अच्छा उन्होंने प्लान कर लिया? ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ We received an email threatening. Email is soliciting people who are sturdy, 6 feet tall, who can speak a little bit of Urdu and a little bit of Punjabi. A fellow by the name of Mr. Verma. We have reported this incident to police. It's threatening. They always do interfere. We had a meeting with the mayor of Houston about this situation a few days ago. And I pointed out to the Indian representatives who were present, Mayor was very fair to all sides, and we said, is the entire NRG stadium for you not enough? We will not interfere with your show. You're entitled to it. We don't have a fight with any Hindu or any other race or color or creed. It's humanitarian. We have a fight. We're a humanitarian organization. Yes. We're speaking on behalf of human atrocities wherever they're committed by whoever they're committed. It's a Sikh general who is committing these atrocities under his command. The atrocities are being committed right now in Kashmir. Hindus should be doing well to themselves to join us in raising this voice. In the long run, it's not sustainable. If one human being is determined to suppress another or convert his religion by force, it's just not sustainable. The world has tried this many times before. It has never worked out, and it will not work out. It's not going to work this way. Oppressing or suppressing, it's not going to work this way. प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चला है. मैं चाहती हूँ कि आप ये दिखा दें किरपान अपनी कि ये आपने जो पहनी हुई है जल्दी से. Yes, the baptized Sikhs must wear this kirpan, and it is not to threaten anybody. It is a defensive. It reminds us that we took the oath to be a Sikh, which is to defend the non-defensible. Okay. So this is a symbol. It's a symbol. So this is a symbol for that. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਕਿਲਰ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ. ये बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं इसमें. ह्यूस्टन की सिटी काउंसिल भी इन्वॉल्व है, उसको भी नहीं पता था इन सब चीजों का. तो खैर हम मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. बात बहुत लंबी है. नाजरीन 22 तारीख को ह्यूस्टन में जो लोग भी देख रहे हैं हमें वो ज़रूर आएँ और कश्मीर के कॉज को सपोर्ट करें. प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. फराह इकबाल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.